Hello everyone, welcome back. So in this video, we'll continue with basic terminology in agronomy as we have discussed quite few in the previous sessions. We have discussed cropping pattern, cropping system, mixed farming, farming system, etc. So we'll continue with types of cropping system. So we'll discuss intercropping, etc. and other terminology. So we'll start with the different types of cropping system. So we know what is the difference between cropping pattern and cropping system. We have discussed in the first video. Now, under cropping systems, we have different types. So we'll start with the first one, that is monocropping. And in the previous video, we have discussed the difference between monoculture and monocropping. Both are not same, though you may see sometimes these two, they are interchangeably used, but there is a difference between them. Okay, sometimes there can be a case where monocropping and monoculture is being practiced. So there might be a situation where only one crop is grown per year and same crop has been grown over the years on the same piece of land. So that is the case it where you can use both monocropping and monoculture. So you can in that situation use both the terms to describe the situation. Okay, so there can be a scenario like that, but monocropping and monoculture, there is a difference between these two terms. So we have discussed what is monocropping, that is growing of one crop per year on a piece of land. Monoculture is growing of same crop again and again on the same piece of land. Okay, so monocropping, in case of monocropping, the cropping intensity is always 100%. So we have discussed what is cropping intensity in the previous video. You know the formula. So in this case, monocropping only one crop. So here the cropping intensity will always be 100. Now the second term is multiple cropping. So multiple cropping means growing of two or more crops on the same field in a year. Okay, so growing of two or more crops, you can grow even more than two crops. This is called as multiple cropping. So here crop intensification is being done in space and time terms. So intensification of cropping in time and space. Now, how are you doing that? So first let us see spatial intensification. So crop intensification in space terms. Intensive crop intensification that is being done in space terms. So growing of two or more crops together on the same piece of land. So in the same season in Kharif, you are growing two crops together on the same piece of land. So intercropping kar rahe ho. Intercropping is a type of multiple cropping. So you are growing two crops side by side on the same piece of land. So that is intensification in space term. यानी तुम एक ही plot में you are growing on the same plot, you are having two crops together or more than two crops together. You can have more than two crops together also. So that is intensification in space terms. Now then you have intensification in time terms, temporal intensification. So you're growing more than one crop, two or more. You're growing two crops or even three crops per year. In monocropping, only one crop was grown per year, but in multiple cropping, in time terms, within a particular period of time, let us say 1 year. So you're growing three crops, Kharif, Rabi, even Zaid crops. So three crops per year. तो टाइम तो उतना ही है लेकिन ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो. सो पर ईयर in monocropping only one crop was grown during the kharif season, but here you are growing three crops, two or more crops. So here intensification is being done in terms of time, temporal. So growing of
two or more crops, sorry, so growing of two or more crops within a year and more number of crops on the same piece of land at any given period. So टाइम एंड स्पेस टर्म्स में इंटेंसिफिकेशन हो रहा है, इंटेंसिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ बोथ टाइम, पर ईयर 3 क्रॉप्स और पर ईयर 2 क्रॉप्स, टू और मोर क्रॉप्स, दैट इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। स्पेस माने एक ही प्लॉट में 1 एकड़ ऑफ लैंड में तुम पहले एक ही क्रॉप ग्रो करते थे, अब एक साथ 2 या 3 क्रॉप्स लगा रहे हो तुम। यू आर ग्रोइंग 2 or 3 क्रॉप्स विद स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट on the same piece of land at the same time. You are growing them simultaneously. So that is intensification in space terms. Okay. So for multiple cropping, suppose you have to go for 2 crops or 3 crops. Main limiting factor क्या है? Why rainfed farming is done? Because you need water, right, for irrigation, right? Mainly in rainfed farming, you depend upon the monsoon. So if you have irrigation facility, you can go for 2 crops. Water is the main limiting factor, right? So if you have fertile land and irrigation supply, you can go for 2 or 3 crops also. So main limiting factor kya hai? One, water. Second is soil should also be fertile. So low intensity of irrigation and preponderance of long duration varieties. So this is also one of the limiting factor. Now we have short duration varieties, but earlier we used to have traditional varieties which used to take long period to come to harvest. So 5 months या उससे ज़्यादा time लगता था. So suppose it is taking 6 months to harvest and all. 6 months या उससे ज़्यादा अगर ले रहा है crop, तो तुम साल में कितने crop लगा सकते हो? So 1 year को अगर accurately 2 halves में divide करो तो 6 months and 6 months. Now suppose one crop is taking 7 months. So बचे 5 months. Right. So suppose all the varieties, मैं एक बहुत ही hypothetical scenario तुमको बता रहा हूँ. Okay. So if you have a situation where you have short duration varieties, suppose 4 months, crop comes to harvest within 110 or 120 days. So now you can go for another crop because 3 में divide करो तुम 120, 120, 120. Okay, you divide the year by 4 months, yani 3. You have 3 parts, 4 months, 4 months, 4 months, right? 12 months a total year mein. Now if you can harvest a crop within 4 months, you can go for another crop. You have 8 months, right? एक और crop लगा सकते हो. But if your crop is taking 7 months, so you will not be able to go for another crop. So short duration varieties, once they were, once the farmers started cultivating short duration varieties, now they can go for 2 crops or more than 2 crops also. In certain areas, even 3 crops are grown where irrigation facility is available and short duration varieties are available. So these two are the main limiting factors earlier. Fertility is also another limiting factor, but because of synthetic fertilizers वो ऐड कर रहे हैं तो fertility ज़्यादा concern नहीं है, but continuously using synthetic fertilizers may also damage the soil in long term. That is another case. But only nutrient application अगर है, then it can be fulfilled by fertilizers, right? So preponderance of long duration varieties and low intensity of irrigation, they were limiting factors earlier, but now we have irrigation facilities available in majority of the regions, and now we have short duration varieties also. So it is possible to go for more than 2 crops and we can intensify the, right? So now multiple cropping, growing of 2 or more crops on the same piece of land in a year, right? Now we have different types within multiple cropping. So first type of multiple cropping that we are going to discuss is intercropping. Now
This intercropping as a term in agronomy, also as a concept, we need to understand it properly. So intercropping, it is very important. It can be asked, you can get in options, in one of the multiple choices you might encounter this term. So you need to understand what intercropping means and what are the advantages, why we go for intercropping. Okay, so government is actively discouraging monoculture. Okay, crop diversification they are promoting. So intercropping is one of the viable option. So what do you mean by intercropping, and we'll discuss the advantages and disadvantages of intercropping. Now, growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land with a definite row arrangement. Now, these are the most important uh, key points. So, two or more crops are grown simultaneously. एक साथ दो क्रॉप या दो से ज्यादा क्रॉप तुम ग्रो कर रहे हो. You're growing two or more crops simultaneously on the same piece of land at the same time, right? With a definite row arrangement. That means, let us say, for example, one you have four rows of maize with, suppose say you have chili, three rows of chili, four rows of maize, and three rows of chili. So this is the arrangement here. So this chili is, so we have four rows of maize and three rows of chili. So this is the arrangement, 4 is to 3. Okay, so four rows of maize, three rows of chili, four rows of maize, three rows of chili. So in this way, this will be repeated throughout the field. So a definite row arrangement, 4 is to 3 ratio of maize and chili, alternate arrangement hoga. Okay, so this will continue throughout the field. So this is the arrangement. So growing of two or more crops. So here we are growing two crops simultaneously on the same piece of land. एक साथ हम दो crops को grow कर रहे हैं with this arrangement: 4 rows of maize, 3 rows of chili, 4 is to 3, 4 is to 3 arrangement in a fixed ratio. This is called as intercropping. Okay, so intercropping is growing of two or more crops simultaneously on the same piece of land with a definite row arrangement or in a fixed ratio. Definite row arrangement बोल सकते हो या फिर fixed ratio में तुम ग्रो करोगे. फॉर एग्जाम्पल व्हीट एंड मस्टर्ड 9:1, यानी 9 rows of wheat. एक रो है, सपोज मैंने तो ऐसे लाइन खींच दिया, बट यू इमेजिन इफ यू सी प्लांट्स, इंडिविजुअल प्लांट्स दे आर इन ए रो, ऐसे इस तरह से ये एक रो है, एक रो में प्लांट्स अरेंज्ड है. नाउ इंस्टेड ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअल प्लांट, मैंने बस एक लाइन खींच दिया, या फिर उसको हम लोग इस तरह से जिगजैग लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक रो में मल्टीपल प्लांट्स होते हैं ऐसे लाइन में, ठीक है. सो 9:1, दैट मीन्स 9 rows of wheat with 1 row of mustard. So 9 rows of wheat लगेंगे, उसके बाद एक रो, सिंगल रो मस्टर्ड का, फिर 9 rows of wheat, then 1 row of mustard. In this way, they will be repeated in the field. So here you see, in intercropping, you are going for intensification, crop intensification in terms of space. Okay, so you are intensifying the crop in space terms. So cropping intensity in space dimension is achieved. यानी लिमिटेड, एक ही 1 acre ऑफ लैंड है, 1 acre ऑफ लैंड में तुम दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगा रहे हो. सो such crops are usually grown along with those which have large row interval. So generally, this is one way of intercropping.
एक और तरीका भी है इंटरक्रॉपिंग का, वेयर suppose the main crop, so here you have one row of sugarcane, okay, one row of sugarcane, this is the second row of sugarcane, this is the, sorry ये straight line नहीं है, okay, this is the second row of sugarcane, this is third row of sugarcane. So एक रो में इस तरह से मल्टीपल sugarcane plants होते हैं. Instead of drawing individual plant, I am just drawing a line. So between the rows जो spacing है it will be large. So लगभग 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर का डिस्टेंस होता है दो रोज के बीच में. So this gap you can utilize. So you can plant another row of another small crop. You can utilize this space या फिर ये space waste हो जाएगा, है ना? So this space will be wasted. So you utilize this space 90 सेंटीमीटर का gap है between two rows. So you can utilize this space and plant another crop. कोई छोटा crop तुम grow कर सकते हो. Okay, so this is another way you can go for intercropping. So without changing the spacing of the base crop. तो sugarcane का जो spacing है उतना ही रहेगा. So number of sugarcane plants in the field will not change. But because they have larger gap between the rows, you are just utilizing the space, not letting it go waste. तो उसके वो बीच में कुछ और crop लगा सकते हो. ठीक है? So that is another way you can go for intercropping. So within multiple cropping, intercropping is a type of multiple cropping क्योंकि वहां पर two or more crops grow कर रहे हो. Intercropping के अंदर फिर again बहुत सारे variations हैं. So now within intercropping we are discussing types. So first one is parallel cropping. So here we are growing two crops together that basically do not compete. Normally जब भी तुम दो crops को एक साथ लगाओगे, दो plants बगल बगल में हैं. Suppose two plants are growing side by side. So this is one plant, this is another plant. So when they are growing nearby, obviously they will compete. There will be competition for sunlight, there will be competition for nutrients, there will be competition for water, right? So plants, they will compete with each other when they are growing nearby. So resources के लिए compete करते हैं. Okay, so obviously when you're growing two crops together, they will definitely interact. Competition will be there. So there will be competition. So whenever you choosing the crops, जब भी तुम intercropping करने जा रहे हो तो crops को choose करोगे ना, कौन से दो crops तुम एक साथ लगाओगे? What two crops you are going to choose that you are growing together? So always there is a principle. So यहाँ पर एक main principle है intercropping में, हमेशा ऐसे crops को choose करो, those two crops that you have decided to grow together, you choose those crops that basically have zero competition, जो compete ना करें, कोई भी nutrients के लिए हो या फिर light के लिए हो, water के लिए हो, और minimum competition हो. Obviously there will be interaction but minimum हो. दोनों एक साथ जब grow कर रहे हो तो negative effect ना हो, compete ना करें. When both are competing, definitely there will be harmed. दोनों को harm होगा थोड़ा बहुत. So you always choose those crops that do not compete for these resources. So parallel cropping is where you are growing two crops that do not compete or very minimum competition. ठीक है? So cultivation of such crops, parallel cropping का मतलब क्या है? Cultivation of such crops that have different natural habitat and zero competition. So compete ना करें. So for example black gram और green gram, यानी ये जो pulses हैं, black gram और green gram, when you grow with maize, you're growing black gram or green gram with maize, then the competition is minimum, especially for the nutrients, because जो pulses हैं green gram या black gram है, उसका जो peak nutrient requirement है
और मेज का जो पीक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, जब उसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो दोनों में डिफरेंस है. If both the crops, their peak nutrient requirement is at the same time, they will definitely compete more. बट अगर दोनों का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, जो पीक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो दोनों अलग अलग टाइम पे है, तो दोनों कंपीट नहीं करेंगे या फिर बहुत ही मिनिमम कंपटीशन होगा. फॉर एग्जांपल, द पीक न्यूट्रिशन डिमांड period for black gram or green gram is 30 to 35 days after sowing. DAS, बहुत बार तुमको DAS बुक्स जब पढ़ोगे तो DAS या DAT बोल के लिखा होगा. इसका मतलब है डेज आफ्टर सोइंग if it is a directly sown crop, whereas DAT माने days after transplanting. कभी का अगर तुमको बुक में कहीं पर मिल गया ऐसा, उसका मतलब ये है डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग. सो मेज का जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, it is peak nutrient requirement is 50 days after sowing, whereas in case of green gram or your black gram, it is 35 days, 30 to 35 days between that time. So they will not compete. जब तुम 30 to 35 days जब तुम्हारा green gram, when you are applying nutrients, mostly green gram and black gram, अगर उन दोनों में से कोई क्रॉप है तो it will use. When you are applying for maize, तब pulses compete नहीं करेंगे maize के साथ. So some थोड़ा बहुत competition, बहुत ही minimum competition होगा. They will not compete for nutrients at the same time. Then you have companion cropping. So ये भी intercropping का एक type है. So such intercropping where production of both intercrops is equal to that of its solid planting. Now here solid planting या soul cropping के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में. That means you are growing a single variety in the field. So for example यहाँ पर देखो sugar cane है. So here 4 rows of sugar cane. Okay. Now sugar cane का जो rows है उनके बीच में जो spacing है that is 90 centimeters for example. ज़्यादा gap ज़्यादा है. Between two rows you have more gap. 90 centimeters का gap है. Now here the number of plants per acre, जो sugar cane का spacing है, number of plants per acre या per hectare, that will remain same as in case of solid planting. यानी अगर तुम सिर्फ शुगर केन ग्रो कर रहे हो उस केस में नॉर्मल जो कमर्शियल स्पेसिंग है उस हिसाब से अगर तुम नंबर ऑफ प्लांट्स गिनोगे, सो सपोज इन द सपोज यू हैव 2 लाख, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 लाख पर एकड़, 2 लाख प्लांट्स पर एकड़ है तुम्हारे पास शुगर केन का. ओके, सो ये नॉर्मल सॉलिड प्लांटिंग व्हेन यू आर ग्रोइंग ओनली शुगर केन. ओके, दिस विल नॉट चेंज. इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तब भी 2 लाख प्लांट्स ही होंगे. सॉलिड यानी ओनली शुगर केन तुमने लगा तब भी, यानी शुगर केन का जो स्पेसिंग है वो तुमने ऑल्टर नहीं किया है. सो शुगर केन इज योर बेस क्रॉप. ये तुम्हारा मेन क्रॉप है, बेस क्रॉप है. इसका स्पेसिंग तुम चेंज नहीं करते हो. नॉर्मल जो कमर्शियल स्पेसिंग है, यू हैव सोन द शुगर केन इन दैट स्पेसिंग. अब बिकॉज शुगर केन का जो रोज के बीच में गैप ज्यादा है, यू विल नॉट, यू डोंट वांट टू वेस्ट दिस स्पेस. ये जो बीच में जो स्पेस है तुम इसको वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए तुमने एक और कोई क्रॉप डिसाइड कर लिया. सपोज से मस्टर्ड और पोटैटो और ऑनियन, कोई भी एक क्रॉप तुमने डिसाइड किया लगाने के लिए. ओके, सो आई हैव डिसाइडेड टू sow another crop between the space left. Okay, दो rows के बीच में जो space है that is too much, so instead of letting it go waste, you are growing another crop. So
इन दिस केस शुगर केन का स्पेसिंग तुमने चेंज नहीं किया है। शुगर केन का नॉर्मल सॉलिड प्लांटिंग या सोल क्रॉपिंग में, यानी तुमने सिर्फ शुगर केन लगाया होता तो नंबर ऑफ शुगर केन प्लांट्स पर एकड़ तब जितने होते अभी भी उतना ही है। सो नंबर ऑफ शुगर केन प्लांट्स पर यूनिट एरिया हैज नॉट चेंज्ड। तुमने शुगर केन का स्पेसिंग चेंज नहीं किया है, बस तुम वो जो गैप है वो यूटिलाइज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट गो वेस्ट। सो ग्रोइंग ऑफ 3 इंटरक्रॉप्स इंडिविजुअली विथ शुगर केन, तुम मस्टर्ड को भी ग्रो कर सकते हो शुगर केन के साथ, पोटैटो को भी ग्रो कर सकते हो, या फिर ऑनियन ग्रो कर सकते हो। ओके, सो ना तो बेस क्रॉप ना ये कंपेनियन क्रॉप जो है तुम्हारा मस्टर्ड और पोटैटो ऑनियन, इनका जो है ईल्ड इट इज हार्डली अफेक्टेड, so that is called as companion cropping। शुगर केन का जो इतना ईल्ड आना था उतना तो आएगा ही वो, एंड जो दूसरा है मस्टर्ड उसका भी पर एकड़ जितना आता है उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, इट विल बी ऑलमोस्ट द सेम। देन वी हैव मल्टी स्टोरीड और मल्टी लेवल क्रॉपिंग, सो विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियो। इसको बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हियर इज एन एग्जांपल। So cultivation of 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on the same piece of land. So here is an example of sugar cane plus mustard plus onion। तुम इन तीनों को एक साथ ग्रो कर सकते हो। और there is a very famous or very good example of coconut with cocoa with pineapple। Okay, so coconut के साथ we can go for pepper, black pepper। It is a wine, so it will be uh, ग्रोइंग विथ कोकोनट। सो कोकोनट के ऊपर हम लोग उसको ट्वाइन कर देते हैं। सो पेपर बिकॉज इट इज ए वाइन इट नीड सपोर्ट, अपने आप से नहीं हो सकता है, सो कोकोनट के ऊपर वो ट्वाइन होके ग्रो होता है। सो कोकोनट प्लस कोकोआ प्लस पाइनएप्पल विथ पेपर, दिस इज अनदर एग्जांपल। सो plants of different height when they are grown together, it is called as multi-storied or multi-level cropping। So there is a principle behind it, we will discuss that in the next video। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, because here the main purpose is to utilize the space, vertical space, क्योंकि कोकोनट का हाइट लगभग suppose say 10 meters or so, pepper will be around 8 meters or so, cocoa will be 2 to 3 meters, and pineapple will be 1 meter। Okay, so they are utilizing the vertical space effectively, because one of the species it is more tolerant to high sunlight, coconut, right, more intense sunlight, whereas cocoa it likes more shade loving, I mean cocoa is shade loving, so coconut जो shade provide करता है, the cocoa will grow under the shade, and it is also utilizing the vertical space below the soil, above the soil and below the soil। above the soil light को properly utilize करते हैं, and below the soil nutrients को। so the root system, you can see cocoa because it is a dicot plant, the root system can go very deep। coconut suppose ये 2 meter तक जाता है, coconut will have up to 1 meter, and it is pineapple up to few centimeter 30 to 40। so growing of 2 or more crops of different height simultaneously on the same piece of land to utilize the vertical space above the soil and below the soil effectively, so that is the main principle behind multi-storied cropping। now so synergetic cropping, so it is also a type of intercropping। so here yield of both crops are higher than their pure crops on unit area basis। now intercropping का main purpose क्या है? जितने भी टाइप के इंटरक्रॉपिंग देख रहे हो, 2 क्रॉप्स को साथ में क्यों ग्रो कर रहे हो? मेन पर्पस इज टू हैव हायर यील्ड, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। सो यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज द यील्ड। मेन गोल तो वही है ना, 2 क्रॉप्स को साथ में ग्रो करने का मेन पर्पस क्या है? यील्ड को बढ़ाना चाहते हो तुम, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो, राइट? सो हियर इन synergetic cropping the combined yield of both the crops will be higher than the sole
yield. I mean sugarcane का अगर तुम solid planting करते हो तो definitely sugarcane plus potato will definitely will be higher than the sole planting या solid planting. Potato अकेले लगाओ या sugarcane अकेले लगाओ, उनके comparison में combined yield of both these crops will be definitely higher. So this is called as synergetic cropping. Now intercropping में crops को लगाने के different तरीके हैं. Okay, so on the basis of percent of plant population used, so on the basis of percent of plant population used for each crop in the intercropping system, we have two types. So इंडिया में जनरली हम लोग जो है वी गो फॉर एडिटिव सीरीज. सो एडिटिव सीरीज एंड रिप्लेसमेंट सीरीज बेसिक सिंपल है. वी हैव जो हमने पहले देखा था उसी का एग्जांपल मैं लूंगा. सो एडिटिव सीरीज में क्या होता है? सो इन एडिटिव सीरीज सपोज से शुगर केन. सो देर आर सपोज से 4 rows ऑफ शुगर केन. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. शुगर केन के बीच में 2 rows ऑफ शुगर केन के बीच में गैप ज्यादा होता है. सो वी डोंट लेट इट गो वेस्ट. तो यहां पर तुमने दूसरा कोई और क्रॉप लगा लिया. तो यहां पर शुगर केन का जो ओरिजिनल नंबर ऑफ प्लांट्स हैं दैट विल रिमेन सेम. शुगर केन का स्पेसिंग तुमने कुछ ऑल्टर नहीं किया है. जस्ट टू एडजस्ट अनदर रो ऑफ क्रॉप यू आर नॉट चेंजिंग द स्पेसिंग ऑफ द बेस क्रॉप. तुम्हारा बेस क्रॉप जो है वो उसका जो पॉपुलेशन है दैट विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ सॉलिड प्लांटिंग. तो शुगर केन अकेले लगाया होता तो उसका जितना प्लांट्स पर एकड़ होता अभी भी उतना ही है. तो शुगर केन इज योर बेस क्रॉप. जस्ट यू आर यूटिलाइजिंग दिस एडिशनल स्पेस. तो ऐड कर रहे हो एक और रो को तुम. मेन क्रॉप का स्पेसिंग में अल्टरेशन नहीं किया है. नंबर ऑफ plants of the main crop remains same that of solid planting. Just we are adding another row to utilize this space. So this is called as additive series. gap को जो rows के बीच में जो gap है उसको तुम use कर रहे हो. This is called additive series. ठीक है. Now replacement series का example. रिप्लेसमेंट सीरीज का एग्जांपल है. सो 9:1 वीट एंड मस्टर्ड का 9:1 यानी 9 rows ऑफ वीट 1 row ऑफ मस्टर्ड. 9 rows ऑफ वीट 1 row ऑफ मस्टर्ड. ये कंटिन्यू होता रहेगा. यही जो तुम्हारा रेशियो है. सो मस्टर्ड को ऐड किया है तुमने. मस्टर्ड को 1 row ऐड किया है बाय रिप्लेसिंग 1 row ऑफ वीट. सारे वीट का था. सो जो वीट का 10th row है यू हैव रिमूव्ड दैट एंड उसकी जगह पर तुमने मस्टर्ड लगाया है. तो वो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा मस्टर्ड आया है 10th row ऑफ वीट यू हैव रिमूव्ड एंड यू हैव रिप्लेस्ड इट विद मस्टर्ड. तो उसको एडजस्ट करने के लिए वीट का जो रोस है उसका स्पेसिंग को तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू एडजस्ट द स्पेसिंग टू इनकॉर्पोरेट दैट मस्टर्ड रो. तो जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो तो ऑल्टर हो गया. सिर्फ वीट अगर होता तो नंबर ऑफ वीट प्लांट्स पर एकड़ that would have been in solid planting and the number of wheat plants now that is different. एक रो ही तुमने हटा दिया ना. वैसे ही कितने पता नहीं रिप्लेस करने पड़ेंगे. ये रेशियो कंटिन्यू होता रहेगा वो पूरे 1 हेक्टेयर में. सो यू हैव चेंज्ड द नंबर ऑफ ओरिजिनल व्हीट प्लांट्स का. एक रो हटा दिया है. हर 10th रो तुमने हटा दिया और उसको रिप्लेस कर दिया मस्टर्ड के साथ. तो ओरिजिनल वीट का जो पॉपुलेशन होना चाहिए था सॉलिड प्लांटिंग उतना तो नहीं है. अब तुमने निकाल दिए कुछ प्लांट्स है ना. 90% ही वीट है. बाकी जो 10% है दैट इज मस्टर्ड. सो ये वीट एंड मस्टर्ड दोनों अब कंपेनियन क्रॉप्स होंगे. नन ऑफ दीज इंटरक्रॉप्स दे आर बेस क्रॉप. तो वीट एंड मस्टर्ड दोनों का जो सॉलिड प्लांटिंग में पॉपुलेशन होना चाहिए था वो नहीं है दोनों का. वीट का भी नहीं है मस्टर्ड का भी नहीं है. 90% वीट का है 10% मस्टर्ड का है. सो बोथ आर नाउ कंपेनियन क्रॉप्स. दोनों में से कोई बेस क्रॉप नहीं है. वेयर एज इन केस ऑफ हियर एडिटिव सीरीज में शुगर केन का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सॉलिड प्लांटिंग ने अकेला शुगर केन लगाया होता तो नंबर ऑफ शुगर केन प्लांट्स पर एकड़
in solid planting and in additive series it will remain same. Number of sugarcane plants change नहीं हुए, sugarcane का तुमने spacing को alter नहीं किया है, बस ये additional extra जो जगह थी उसको utilize करने के लिए you have just incorporated another crop. So additive series में you don't change the spacing of the base crop. Base crop का population उतना ही रहता है, बस additional space तुम utilize कर रहे हो. Replacement series में you change the spacing of the main crop. तुमने main crop का जो population है उसको alter कर दिया है. So here both are companion crops. None of them is the base crop. Here sugarcane is the base crop. अगर ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है चेंज हुआ है रिप्लेसमेंट सीरीज में, दोनों ही कंपेनियन क्रॉप्स होते हैं, नन ऑफ देम इज द बेस क्रॉप. तो ओरिजिनल जो तुम्हारा वीट है, वीट का तुमने पॉपुलेशन को रिप्लेस किया है मस्टर्ड के साथ, या फिर 4:3 रेशियो ऑफ मेज एंड चिल्ली का एग्जांपल लिया था हमने, 4 rows ऑफ मेज 3 rows ऑफ चिल्ली, दैट यू हैव कंटिन्यूड. यानी हियर दिस रेशियो विल कंटिन्यू, यानी ओरिजिनल जो मेज है उसका भी वो, और मेज एंड चिल्ली बोथ आर कंपेनियन क्रॉप्स, दोनों में से कोई भी बेस क्रॉप नहीं. सो दीज टू इंडिया में जनरली ज्यादातर हम लोग ये फॉलो करते हैं, बोथ आर डन, बट मेजॉरिटी जो केसेस है उसमें एडिटिव सीरीज फॉलो करते हैं. सो हाउ इट लुक्स, यहाँ पे तुमको देखो शायद ये चिल्ली है, चिल्ली एंड मेज साथ में ग्रो हो रहा है. सो फ्यू रोस ऑफ मेज एंड फ्यू रोस ऑफ अनदर क्रॉप. तो यहाँ पर भी तुम देख सकते हो वी हैव ए वीट के साथ तुमको मेज लगाया है. यहाँ पर वीट है, यस इट इज वीट. वीट के साथ तुमको मेज या फिर कोई दूसरा क्रॉप है, ये कोई ग्रास है, मेज और सोरगम. ओके, सो दिस इज हाउ इट लुक्स, फ्यू रोस ऑफ. सो एक डेफिनेट रो अरेंजमेंट में, एक डेफिनेट पैटर्न में हम लोग ग्रो करते हैं. नाउ फॉर गोइंग फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग अगर तुमको प्रॉपरली करना है, फॉर सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग देयर आर certain conditions, prerequisites for successful intercropping. क्या है वो prerequisites? So the main objective of intercropping is to get higher productivity per unit area in addition to stability in the production. तो अगर एक क्रॉप कोई पेस्ट के द्वारा डैमेज भी होता है तो दूसरा क्रॉप है, यील्ड आएगा तुमको वहां से. ओके, एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, ओवरऑल यील्ड जो है दैट फ्रॉम दैट यूनिट एरिया यू वांट टू इंक्रीज. सो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना and to have more stability. Then क्या है मेन कंडीशंस? ये तो मेन गोल है, एम है, इसको पाने के लिए तुमको कंडीशंस फुलफिल करना है. दैट देयर शुड बी मिनिमम कंपटीशन. सो द टाइम ऑफ पीक न्यूट्रिएंट डिमांड ऑफ कंपोनेंट क्रॉप शुड नॉट ओवरलैप. जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था, इफ यू ग्रो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम विथ मेज, they will not compete much for nutrients, because peak nutrient requirement for grams, black gram or green gram, is 30 to 35 days after sowing, whereas in case of maize it is 50 days after sowing. So they will not compete. दोनों जो क्रॉप्स हैं देयर शुड बी डिफरेंस इन मैच्योरिटी, ताकि ओवरलैप ना हो जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट टाइम है वो सब. सो देयर शुड बी डिफरेंस इन द मैच्योरिटी ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप. सो एटलीस्ट 30 डेज का डिफरेंस होना चाहिए दोनों क्रॉप्स में. They should not compete for resources. So these are certain prerequisites. Now intercropping कर रहे हो, कुछ एडवांटेज होगा तभी तो कर रहे हो. मेन एम क्या है? टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी, मोर यील्ड. ओके, सो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ इंटरक्रॉपिंग. क्या है? इट गिव्स एडिशनल यील्ड. यील्ड आया है तो इनकम भी आएगा, देन कंपेयर टू सोल क्रॉपिंग. तो सिंगल क्रॉप जब तुम ग्रो करते हो तो उसके कंपैरिजन में इंटरक्रॉपिंग में ज्यादा यील्ड आता है. दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज. इट एक्ट्स एज इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रॉप फेलियर. अगर एक क्रॉप फेल होता है तो दूसरा क्रॉप तो है. ओके, सो इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप्स. इंटरक्रॉप्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एज द न्यूट्रिएंट अपटेक इज मेड फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स. अच्छा, इसके लिए क्या है, तुमको एक लेग्यूम अगर तुम साथ में ग्रो कर रहे हो इंटरक्रॉप में, it will be beneficial. Now इसका मतलब क्या है? बेसिकली suppose you are growing crops with different habitat, different habitat बोल रहा हूँ, सॉरी, different habit. यानी एक ग्रास है which has advantageous root system,
उसको तुम ग्रो कर रहे हो एक डाइकॉट के साथ, which has taproot system. So they are taking nutrient from different zones. तुम्हारा जो है grass, it will take nutrients from the top, so top layers, whereas it will, ये top 30 centimeters लेगा, ये up to 60 to 1 meter तक, या suppose say 60 to 70 centimeters. So they are taking the nutrients from डिफरेंट जोन्स. तो ये शैलो सबसे ऊपर वाले जोन से ले रहा है, ये थोड़ा डीपर लेयर से रहा है. सो न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी डिप्लीटेड फ्रॉम द सेम जोन. ओके, सो रिडक्शन इन सॉइल रन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ वीड्स. दो क्रॉप को साथ में ग्रो कर रहे हो तो ज्यादा लाइट भी, यानी सपोज फॉर एग्जांपल एक, इफ यू आर ग्रोइंग फॉर से if you are going for maize और sorghum, so grass crop लगाया तुमने, ठीक है, कोई their roots are generally concentrated. Okay, so this is the grass crop. Now their roots do not spread much. अब ये जो गैप है यहाँ पर क्या है ना, वीड्स, सनलाइट मिल रहा है ना, so सनलाइट है एंड इरिगेशन जब भी दोगे तो द वीड्स दे विल ग्रो अप, सो दे विल easily proliferate. एंड दे डू नॉट होल्ड मच सॉइल. तो ये जो है ना एरोजन प्रमोटिंग क्रॉप्स बोलते हैं. तो एरोजन ज्यादा होता है बिकॉज ये जो सॉइल है ये एक्सपोज्ड है टू रेनफॉल एंड ऑल दैट नेचुरल एजेंसीज. तो एरोजन भी ज्यादा होता है, वीड्स भी ज्यादा ग्रो होते हैं यहाँ पर. पर अगर सपोज तुम इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो, यानी ये जो गैप है यहाँ पर तुमने कोई और क्रॉप लगा दिया, सपोज इंटरक्रॉपिंग तुम कर रहे हो, यहाँ पे बीच में तुम्हारा एक कोई डाइकॉट है, कोई लेग्यूम है सपोज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा सनलाइट नीचे तक पेनिट्रेट नहीं करेगा बिकॉज ये जो स्पेस है यहाँ पर सनलाइट नहीं गिर रहा है, बिकॉज द लीव्स आर इंटरसेप्टिंग द सनलाइट. तो वीड भी कम ग्रो होगा एंड दीज मेन क्रॉप जो इंटरक्रॉप्स हैं वो compete करेंगे वीड्स के साथ. एंड बिकॉज इट हैज टैप रूट सिस्टम, द रूट्स दे स्प्रेड मोर एंड दे होल्ड मोर सॉइल. तो एक रेनफॉल डायरेक्टली नहीं गिरेगा सॉइल के ऊपर टू डिटैच द पार्टिकल्स. द रेनफॉल एंड सनलाइट विल बी इंटरसेप्टेड बाय द लीव्स ऑफ दिस लेग्यूम. सो इंटरक्रॉपिंग जब कर रहे हो तो एरोजन भी कम होता है, सनलाइट डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है नीचे तक, so weeds they will also be suppressed and these main intercrops they will compete with the weeds, right? So intercrops provide shade and support to the other crop also. So some crops they can serve as nurse crops. So initial stages mein some crops can support the other crops by giving shade and acting as a nurse crop. So intercropping system utilizes resources efficiently and overall productivity of the land will be improved. So ये advantages है. अगर तुमने प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो किए हैं, ऐसे क्रॉप्स लगाए हैं जो compete ना करें, all those principles if you have followed, maturity में gap है, then you will have these advantages. Now disadvantages, what are the disadvantages of intercropping? So if you do not follow the principles then you will have disadvantages. अगर तुमने ऐसे क्रॉप्स चूज किए हैं जो compete कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, they are competing for nutrients, they are competing for light, they are competing for water, then you will have decrease in the yield. So
you follow the principles properly. So intercropping जब कर रहे हो तो root system में difference होना चाहिए. So you're growing those crops together which have different root systems. So ताकि एक ही layer से nutrients deplete ना हो. Okay. If one of the crop promotes erosion, the other crop should prevent erosion. So yield decrease as the crops differ in their competitive ability. So you have to follow those principles. क्या है ना, prerequisites जो बोला था मैंने. So if you follow that, you will not have these disadvantages. So management of intercrops having different cultural practices seems to be a difficult task. So suppose दो totally different crops हैं जिनका तुम एक साथ इरिगेशन नहीं दे सकते हो, या फिर दोनों का कल्टीवेशन जो इंटर कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस दे आर टोटली डिफरेंट. सो मैनेज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. ओके. सो यू कैन नॉट इरिगेट दम प्रॉपरली, एक साथ इरिगेशन नहीं दे सकते. हाँ. सो improved implements cannot be used efficiently. So suppose if both the crops come to harvest at the same time, तुम उसको एक साथ ही हार्वेस्ट कर सकते हो. लेकिन अगर मैच्योरिटी में एक और प्रिंसिपल क्या था, दे शुड बी गैप, 30 डेज का मैच्योरिटी होना चाहिए. सो ऑब्वियसली दोनों को एक साथ हार्वेस्ट नहीं कर सकते. सो जैसे एक बड़ी बड़ी मशीन होते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर जैसे है, तो एक साथ you cannot use such big machines, because when you are harvesting one crop, other crop will be damaged which has not yet reached maturity. So highly mechanized अगर फार्म है तो you cannot go for, जहाँ पर few rows, 5 rows of maize, 5 rows of चिल्ली अगर लगाया है तो more efficient way में तुम उसको हार्वेस्ट या ऐसे नहीं कर सकते, because it will be difficult to do that. So harvesting is difficult, and higher amount of fertilizer or irrigation water cannot be utilized properly as they have different needs. एक क्रॉप को जब तुम हार्वेस्टिंग सॉरी इन वन क्रॉप व्हेन यू आर इरिगेटिंग, दूसरा क्रॉप बहुत सेंसिटिव है. हाँ, एक क्रॉप में अगर तुम वीडिंग कर रहे हो, दूसरा क्रॉप को डिस्टर्ब करोगे तो इट मे लीड टू शेडिंग ऑफ फ्लावर्स. अगर कोई बहुत सेंसिटिव क्रॉप है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू go for those intercultural practices. Then after intercropping, so intercropping, multiple cropping mein first one is intercropping. Now intercropping is, you can say, somewhat advanced method. intercropping से पहले mixed cropping करते थे. Before the intercropping people used to practice mixed cropping. mixed cropping बहुत simple है. So intercropping is the advanced form, yani growing of 2 or more crops in specific row arrangement or in specific ratio on the same piece of land. So you are growing crops in definite row arrangement. पहले ऐसा कोई row arrangement नहीं होता था. So you have mixed 2 or 3 crop seeds, 2 या 3 crop का seeds तुमने mix कर दिया और ऐसे broadcast कर दिया. So you mix the seeds of 2 or more crops and you randomly broadcast it. कोई specific row arrangement नहीं है, ऐसे कहीं भी grow हो रहे हैं. Main problem क्या होगा? Intercultural operations वो कुछ नहीं कर पाओगे. They are growing randomly without any row arrangement. Harvesting, intercultural operations, irrigation, nutrient application, वो कुछ भी तुम properly नहीं कर सकते हो. So बहुत ही small scale में garden वार्डन में जहाँ पर cultivate करते थे छोटे piece of land में, there you can go for mixed cropping. But on a larger scale, if you are doing this, this was not feasible. So mixed cropping is just mixing the seeds of 2 to 3 crops and you just broadcast it. जहां गिरेंगे वहां कोई specific row arrangement नहीं, randomly कहीं भी grow हो रहा है. So that is mixed cropping. mixed cropping से ही तुम्हारा intercropping evolve हुआ है. intercropping mixed cropping से ही evolve हुआ है. mixed cropping is the primitive form, intercropping is the advanced form. वहां जहां पर specific row arrangements तुम कर रहे हो for convenience. So what is mixed cropping? Cultivation of 2 or more crops simultaneously on the same land without any row arrangement or fixed ratio. So generally mix कर दिया seeds को और broadcast.
So that is how it is done. So it is subsistence farming. Large scale में नहीं कर सकते, छोटा सा गार्डन है या छोटा सा एरिया वहां तुम कर सकते हो, बिकॉज लार्ज स्केल में करोगे तो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, वो सब एक साथ नहीं कर सकते, बिकॉज दीज प्लांट्स आर रैंडमली ग्रोइंग, कोई रो अरेंजमेंट नहीं है. हार्वेस्टिंग कैसे करोगे? इंटरकल्चरल ऑपरेशंस यू विल नॉट बी एबल टू गो फॉर. सो मिक्स क्रॉपिंग इज द प्रिमिटिव फॉर्म. वहां से इवॉल्व होके हम लोग एक स्पेसिफिक रो अरेंजमेंट में क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग. नाउ सीक्वेंशियल और सीक्वेंस क्रॉपिंग, this is the next type of intercropping, which is sequence cropping or sequential cropping. Now what do you mean by sequence cropping or sequential cropping? Simple words में sequential cropping का मतलब है एक क्रॉप हार्वेस्ट होने के बाद immediately you will go for sowing of next crop. Okay, so sequence और sequential cropping और non overlap cropping भी बोलते हैं इसको. बेसिकली एक क्रॉप को हार्वेस्ट करोगे, सपोज तुमने मॉर्निंग हार्वेस्ट कर लिया तो उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन, बहुत ज्यादा गैप नहीं देते हैं. सो इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट क्रॉप यू सो द नेक्स्ट क्रॉप. सो growing of two or more crops in quick succession without much gap, quick succession on the same piece of land in a farming year. So sowing of succeeding crops and harvesting of the sowing of the succeeding crop and harvesting of the preceding crop, यानी पहला क्रॉप, preceding crop माने पहले वाला क्रॉप का हार्वेस्टिंग एंड दूसरे वाले क्रॉप का सोइंग ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली होता है विदाउट गैप. सो हियर इज एन एग्जांपल. जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ मेज पोटैटो इज सोन, और जस्ट आफ्टर डिगिंग ऑफ पोटैटो, पोटैटो को हार्वेस्ट करने के बाद ही इमीडिएटली चिल्ली तुम सो कर देते हो. सो दीज आर एग्जांपल्स. इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए यू हैव ए डायग्राम हियर, सी. तो दिस डायग्राम ये जो है ये अरुण कात्यान से लिया है, ठीक है, सिंपल वे में. सो हियर इज यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, यानी फर्स्ट क्रॉप का जो सोइंग है यहां पर तुमने किया है, दिस इज द पॉइंट, एंड दिस विल बी हार्वेस्टेड हियर. फर्स्ट क्रॉप का हार्वेस्टिंग. सो सेकेंड क्रॉप का जो सोइंग है इट इज डन हियर. सेकेंड क्रॉप का, फर्स्ट क्रॉप का हार्वेस्टिंग और सेकेंड क्रॉप का सोइंग जो है वो एक साथ कर रहे हो गैप के बिना. सो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग और नॉन ओवरलैप क्रॉपिंग. यानी दो क्रॉप्स कभी भी ओवरलैप नहीं होते हैं. एक क्रॉप का हार्वेस्टिंग के बाद तुम दूसरे क्रॉप का सोइंग करते हो. देयर इज नो ओवरलैप बिटवीन टू क्रॉप्स. नाउ द नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द लास्ट वन. उसके बाद हम लोग मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग will crop rotation and multi-storied cropping will discuss in the next video. So this is the last type of multiple cropping. So growing of two or more crops on the same piece of land, but in case of relay cropping, so अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं that is relay cropping. relay cropping में और sequential cropping में एक जो मेन डिफरेंस है, so relay cropping में क्या है, there is overlap. Okay, so there is overlap of two crops. So growing of two or more crops simultaneously during the part of life cycle of each crop. यानी फर्स्ट क्रॉप का हार्वेस्टिंग से पहले ही तुम सेकंड क्रॉप का सोइंग कर देते हो. पहला क्रॉप अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है. बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द फर्स्ट क्रॉप you are going for the sowing of second crop. So first crop का जो last period है, last stages है, और second crop का जो initial stages है वो overlap होते हैं. Okay, so there is overlap between the crops. All right, so growing of two or more crops simultaneously during the part of
life cycle of each crop. So there is an overlap between the crops. So succeeding crops यानी second वाला crop जो है, succeeding crop is planted before the harvesting of the preceding crop. पहले crop के harvesting से पहले ही तुम दूसरा वाला crop लगा दे रहे हो. Okay, so you can see here it in the example. So sowing of first crop is done here. Sowing of first crop. So first crop grow हो रहा है and before the first crop is harvested, first crop का harvesting कहाँ हो रहा है? यहाँ पर harvesting of the first crop, it is harvested here. You are already sowing the second crop. So first crop के harvest होने से पहले ही तुम second crop लगा देते हो. So ये तुम्हारा overlap period है. First crop and second crop के बीच में overlap हो रहा है. So succeeding crop is planted before the preceding crop is harvested. So there is an overlap of life cycle. So growing of two or more crops simultaneously during the part of life cycle of each crop, यानी दोनों crops का first and second crop का जब life cycle चल रहा है दोनों के बीच में overlap है. So second crop is sown before the first crop is harvested. तो ये तुम्हारा रिले रेस की तरह ही होता है ना. सो रिले रेस में क्या होता है, वन रनर ही विल कंप्लीट द सर्कल, और अगर 400 मीटर है या फिर 4x100 है या 4x400 है, सो एक पूरा चक्कर मार के आएगा 4x400 में एंड ही विल पास ऑन द बैटन टू द नेक्स्ट रनर. वो फिर पूरा चक्कर मारेगा, थर्ड वाले को देगा, फिर लास्ट वाला. सो इन द सेम वे देयर इज एन ओवरलैप. सो हियर second crop is planted after the first crop has reached reproductive stage, यानी वो फ्लावरिंग के बाद हम लोग सेकंड क्रॉप को सो कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल जो तुम्हारा ये ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो बिहार इस तरफ जो प्रैक्टिस होता है राइस और ग्राम के साथ. सो राइस हार्वेस्ट करने से पहले, सो बिफोर मीन आफ्टर द फ्लावरिंग, जैसे तुम्हारा सीड फिलिंग शुरू हो जाता है, यू विल सो ग्राम, ग्रीन ग्राम लगा देते हैं. सो लास्ट जो तुम्हारा मॉइस्चर बचा हुआ है सॉइल के अंदर, सो रिमेनिंग जो लास्ट में क्या है तुम्हारा ग्रेन फिलिंग लास्ट स्टेजेस में आता है, तो तुम इरिगेशन रोक देते हो. ग्रेन फिलिंग के टाइम पे इरिगेशन करते हैं, दैट विल बी द लास्ट इरिगेशन. उसके बाद बंद कर देते हैं इरिगेशन टू लेट इट मैच्योर. एट द एंड ऑफ द ग्रेन फिलिंग वो इरिगेशन रोक देते हैं. सो जो भी मॉइस्चर बचा हुआ है उस मॉइस्चर को यूटिलाइज करके द ग्रीन ग्राम इट विल germinate, and so there is overlap. तो पैडी और ग्रीन ग्राम के बीच में ओवरलैप, so that is called as relay cropping. Okay, so we have discussed certain terms, we have discussed intercropping in detail. So in the next video we will discuss multi-storied cropping with the example, and we will discuss crop rotation, so that concept. All right, so that will be all in this video. So we have discussed multiple cropping in depth. मल्टीपल क्रॉपिंग का जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो दैट विल बी ऑल. थैंक यू वेरी मच.